Welcome to the 19th episode of Weekly Takes. Today is October 10th and we are only 24 days away from the elections and the future of America, or we can even say future of the world. We'll start with international news of USA focused on the elections 2020. We will discuss the various opinion polls and what they say about the minds of the electorate. How did the vice presidential debate go? I would ask you, who impressed you rather than who won? Well, who won will only be known after the polls. We'll also talk about a little known fact about New York City, news of India, wherein we will have an update on Sushant Singh Rajput murder mystery, which is getting deeper and murkier day by day. We'll briefly talk about the history of BIHAR, and last but not the least, we'll talk about the rumblings within the Congress party in India. At this juncture, I must thank you all for liking my program, as the last episode had more than 8,500 views. आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया. Namaste, Sat Sri Akal, Adab. This is Jagjit bringing you the weekly takes from New York in this cold morning. It has started to getting cold here as the mercury reads 16 degrees Celsius today. Let's begin. International news. The World Bank has warned that 150 million people could fall into extreme poverty by the end of 2021 due to the pandemic and accompanying global recession, with the levels of global poverty set to rise for the first time in 20 years. In order to reverse this serious setback to developmental progress and poverty reduction, countries will need to prepare for a different kind of an economy by allowing capital, labor, skills, and innovation to move into new businesses and sectors. Keep a watch, America. In another news, UAE's biggest builder, which made the Burj Khalifa, files for bankruptcy, and over 40,000 people would lose jobs. Economy the world over is in shambles, and it needs a very careful, innovative resurrection. Leaders will have come up with new ways to bring the economy back. A hard work. Now moving over to the news about USA with focus on elections 2020. All our eyes and ears are riveted on all that is happening in that regard and all that is in the backdrop of the pandemic. Debates with plexiglass, and now the latest second presidential debate proposed initially to be virtual, which President Trump denied to participate and ultimately was cancelled, which leaves us with only one debate, that also perhaps before the elections. There is one thing which I fail to understand, that with elections so close, who if any are these uncommitted or undecided voters, or are these people looking for some kind of media attention? Let me tell you folks, not even the opinion poll makers are unbiased. Choose your channel for the news of the opinion polls and you get to hear what you want to hear. You want to see Biden as the president? Tune to CNN. And you want another 4 years for President Trump? Tune to Fox. This is a reality. This is how divided or biased our media is. And then we talk about the nation being divided? Come on. Are we all kidding? What do you think, America? In the vice presidential debate, we heard the moderator asking about a smooth transition of power after the election. Would President Trump deny it? Should that be a question in a democracy where everything is supposedly governed by the rule of law? It was rule of law that in 2016, immediately after the elections, when a new president was elected, proceedings for impeachment started. It was freedom that made no senior leaders from the defeated party to attend the inauguration of a new president. Yes, it was as per the freedom of our rights as enshrined in the Constitution. But was it ethical? After all, it was the inauguration of an American president. And what message did we try and send or convey to the world? And then
we say that the image of America has gone down? Are we all not responsible for this? Think about it, America, before we come to any kind of a conclusion. Now, moving over to what the opinion polls predict. The recent NBC News Wall Street Journal poll conducted September 30th through October 1 revealed Joe Biden leading President Trump by 14 points, 53 to 39, up from an 8-point lead a week ago. The Rasmussen Report's daily presidential tracking poll for Friday, sponsored by Whatfinger News, the best Drudge Report alternative, shows that 46% of likely US voters approve of President Trump's job performance, 52% disapprove. And once again, like in other episodes, I reiterate, America, before exercising your franchise, you must ponder on these three factors. Number one, what is good for the USA? Number two, what or who is good for your country back home? And number three, who is more supportive and understanding of your cultural ethos? At this juncture, I'll relate to you a happening of 1992. Back in the 90s, United States, to take control of Russia, which had disintegrated, proposed a $24 billion aid package to Russia. Russia was in dire straits. At the same time, India was trying to get cryogenic engines from Russia. The value of the deal, $250 million. These engines were crucial for the Indian space program, especially to graduate from the PSLVs to GSLVs. President Bush was okay with it, but one Democrat senator put in an amendment which stated that if Russia sold the cryogenic engine to India, this aid package would be scuttled. Russia badly needed this aid. It had no choice but to back down from the deal it already had with India. In the same period, China was taking technology from Russia. The United States, indeed this senator, of course, preferred to look the other way. Not just that, there were numerous attempts of sabotage of the Indian cryogenic program by some interested foreign agencies. It took years, but India developed its own solution, linchpinning on the little help it had gotten from Russia before the deal was scuttled. Look at the news item published in Los Angeles Times, link of which is being given below, to know who the senator was. But of course, I would reveal to you at this point of time. The senator who brought in the amendment to scuttle the deal, Senator Joe Biden. What do you think? Share your thoughts. Last but not the least, look for answers. Which party thinks about you? And only then exercise your franchise. Moving over to some interesting facts about New York City. The narrowest house in New York City is in the West Village. 75.5 Bedford Street is just over 9 feet wide. It can cost over $289,000 for a 1-year hot dog stand permit in Central Park. There is a secret train platform in the Waldorf Astoria Hotel. Did you know about it? I'm sure you did not. There are more undergrad and graduate students in New York City than Boston has people. Imagine. Do you know of any more interesting facts about New York City which we did not talk about? Then share it with us and you will have a special mention in the next episode. अब चलें भारत की ओर। पहले अपडेट बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का।
हर दिन घटनाक्रम में कुछ नई जानकारी मिलती है और केस उलझता हुआ आगे बढ़ता रहता है। सुशांत की मौत के बहाने ही सही, पर उम्मीद है बॉलीवुड से नशे के गैंग की समाप्ति तो होगी। As days are passing by, there does not seem to be any progress on the case. The latest is that the accused, jailed by the NCB, is out on bail, granted by the High Court. Family is to move to Supreme Court for directions. All said and done, SSR warriors and people all over the world sympathetic to the cause and looking for answers to the Sushant Rajput and Disha Salian murder case are disturbed. The government may have to face the consequences. In the same as the popular shows Kaun Banega Crorepati, Big Boss, Kapil Sharma Show, etc. have faced the backlash by the people after a boycott call on social media. The power of the voice of the people cannot be defeated. Remember that for all times. अब बात बिहार के इतिहास की। 1988 में कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद बिहार में विपक्ष का गढ़ टूट रहा था। तब तक कांग्रेस मजबूती के साथ बिहार में अपनी वापसी कर चुकी थी। इस समय देवीलाल और शरद यादव ने विपक्ष के नेता के रूप में लालू यादव का नाम सुझाया। उसी समय भागलपुर में भीषण जातीय दंगे भड़के, जिसमें बिहार 2 महीने तक आग में जलता रहा। उस समय सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे और इसी आधार पर उन्हें हटना पड़ा और उन्हें हटाकर जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी समय से बिहार में एक नया समीकरण शुरू हो गया। इस बार यह खेल मुसलमान खेल रहे थे। धीरे धीरे वे लालू यादव की तरफ रुख करने लगे। वे लोग और अन्य की तरह कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। मंडल कमीशन लागू होते ही मानो जंगल में आग लग गई और इसने पूरे देश को अपने लपेटे में ले लिया। अब सवर्ण और दलित दोनों आमने सामने थे। मंडल कमीशन ने यह रिपोर्ट अपने अनुसंधान में दी कि पिछड़े वर्गों को सरकार के हरेक क्षेत्र में निश्चित जगह प्रदान किया जाना चाहिए और उसे आरक्षण का नाम दिया गया। उन्हें समाज की हर मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। बिहार में इससे जो संघर्ष पैदा हुआ वह एक खूनी संघर्ष था। 1990 में जब चुनाव हुए तो पिछड़े वर्गों के विधायकों की संख्या सवर्णों से अधिक थी। 121 नंबरों के साथ जनता दल सबसे आगे था और कांग्रेस को 71 सीटें हासिल हुई थी। देवीलाल जो उप प्रधानमंत्री थे, उनकी पहली पसंद लालू थे और चंद्रशेखर की पसंद रघुनाथ झा थे। जगन्नाथ मिश्र की पसंद श्याम सुंदर दास थे। पर जब विधायक समिति के चुनाव हुए तो दास को 54, रघुनाथ मिश्र को 14 और लालू को 58 वोट मिले। इस तरह लालू का मुख्यमंत्री बनना तिकड़म कम और लोकतांत्रिक अधिक था। जिस दिन से लालू मुख्यमंत्री बने, उनका अजब और गजब प्रयोग शुरू हो गया। वे जन संवाद स्थापित करने में माहिर थे। इसलिए उन्होंने राज्यपाल भवन न जाकर गांधी मैदान में अपना शपथ ग्रहण किया। 10 मार्च 1990 उन्हें राज्यपाल यूनुस सलीम ने जनता के बीच शपथ दिलवाई। लालू ने मुख्यमंत्री बनते ही जनता को यह संकेत देना शुरू कर दिया कि वे जनता और नेता के फर्क को मिटा देना चाहते हैं। प्रारंभ में उन्होंने मुख्यमंत्री आवास जाने से इनकार कर दिया और अपने बड़े भाई के क्वार्टर में, जो पशुपालन विभाग में कार्यरत थे, उन्हीं के साथ रहने लगे। बाद में जब कामकाज चलाने में दिक्कत होने लगी, तब वे मंत्री आवास में आ गए। इस नए मुख्यमंत्री में आम आदमी की झलक दिखाई देती थी। उन्होंने व्यवस्था बदलना नहीं चाहा, वरन छोटे छोटे प्रयोगों से जनता में उत्साह भरकर अपना कार्य करना प्रारंभ किया। साधारण कामों से वह जनता और खासकर यादवों में लोकप्रिय बनते गए। सबसे पहले उन्होंने पटना के स्पीड ब्रेकरों को तोबा दिया। कर्मों की, क्योंकि जब ग्वाले दूध ले जाते थे तो उनका दूध छलकता था, और इस छोटे से प्रयोग से उन्होंने घर वालों का दिल जीत लिया था। वे बिहारियों के जनप्रतिनिधि थे क्योंकि जनता से उनका सीधा संपर्क था। वे दलितों के मसीहा थे और अब मुसलमान भी उन्हें अपना हितैषी समझने लगे। माई मुसलमान और यादव का गठजोड़ यानी का समर्थन राजनीति का एक नया प्रयोग था और इसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। कभी साइकिल पर चलना,
कभी अचानक ऑफिसों का दौरा करके सुस्त अधिकारियों को पंखे से लटकाने की धमकी देना, कभी सड़कों के खुले नाले साफ करने लग पड़ना, आदि आदि अचंभित करने वाले और ध्यान आकर्षित करने वाले, मीडिया में जगह पाने वाले कामों से वह शासन चलाने लगे। उनकी कार्यशैली अन्य नेताओं की तुलना में आकर्षित करती थी और मीडिया तथा कैमरे का इस्तेमाल किस तरह अपने फायदे के लिए होना चाहिए उसे भी वह बखूबी समझते थे। उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। मुसहर जातियों को सरकारी कोष से घर बनवाकर उन्हें स्थापित करना एक सराहनीय कदम साबित हुआ। मुसहरों ने उसे इज्जत बढ़ाने वाले कदम के तौर की तरह देखा। अनेक ऐसे जनता को लुभाने वाले और मीडिया को आकर्षित करने वाले काम करते गए। चरवाहा स्कूल, चरवाहा विद्यालय भी एक ऐसा ही कदम था। चरवाहा स्कूल एक ऐसी परिकल्पना थी जिसकी सराहना हर जगह हुई। बच्चे पढ़ते ही रहे, गाय चरती रहीं और प्रकृति के सानिध्य में विद्या अर्जन हो, यह एक अनूठी सोच थी। विदेशों तक में उसकी सराहना हुई। बिहार राज्य में पिछड़े वर्गों की वापसी हर क्षेत्र में हुई। सरकारी महकमों में, खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में यादवों की बड़े पैमाने पर वापसी हुई। मुसलमानों के बीच लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जब राम रथ यात्रा को लालकृष्ण अडवाणी लेकर चले और धनबाद होते हुए पटना घुसने लगे तो लालू जी ने शांति और सौहार्द भंग होने के कानूनी दांव का इस्तेमाल करके उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। लालकृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे मुसलमानों ने अपने एक निरपेक्ष राजनीतिक कदम समझा और उनकी उम्मीदें और बढ़ गईं। सवर्ण जो बिहार में 13% हैं और उनकी भागीदारी कम होती गई और दलित जो 51% हैं, उनकी भागीदारी खास करके यादवों की भागीदारी बढ़ती चली गई। उनका वर्चस्व कायम होता गया। यह सब बिहार की व्यवस्था को सुधारने नहीं वरन अपनी सत्यता कायम रखने के लिए था। इस उठापटक से लालू और बाद में उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने सरकारी तंत्र को तबाह कर दिया। उनके जंगल राज को बिहार कभी नहीं भूलेगा और यह याद दिलाना भी आवश्यक है कि वैसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। लालू ने जैसा राज किया और जो दुख जनता ने उस समय भोगा वह फिर न दोहराया जाए, ऐसा सोचना सही है। एक ऐसा शासनकाल जिसमें भू माफिया, कोयला माफिया, हत्या, बलात्कार, डकैती और नामचीन बाहुबलियों का राज हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आज के एपिसोड में बिहार के इतिहास से बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे लालू राज्य के अन्य क्रियाकलापों के बारे में। अब बात 150 साल से भी ज्यादा पुरानी कांग्रेस पार्टी की। आज की तारीख में पार्टी नेतृत्व विहीन है और आंतरिक मतभेदों में उलझी हुई है। पार्टी सोशल मीडिया तक सिमट कर रह गई है। नजदीक से विश्लेषण करने पर एक दूसरी ही तस्वीर नजर आती है। It is a unique twist, a new angle. On the media front, you might be feeling that Congress led by Rahul is attacking BJP in Uttar Pradesh on multiple fronts. But they at the same time silent on the killings in Rajasthan, coming up with statements which at times make you even laugh. अगर हम सत्ता में होते तो चीन को 15 मिनट में भगा देते. But if you analyze closely, it is actually reinforcing Gandhi family supremacy within the Congress party, and perhaps there is nothing against the BJP. These are ploys to relaunch Pappu. Just a month back, there was a huge inner revolt against Gandhis, and 23 senior leaders within the Congress party wrote a letter to the interim Congress president asking for a full-time president and elections within the party be held to elect such a leader. Construed as an attack on their leadership within the party, which is now more or less a private limited company, efforts were done to crush the demand seen as a revolt. What followed is this. First, Sonia Gandhi quietly removed all those 23 leaders from all positions. Check out Ghulam Nabi Azad, Anand Sharma, Manish Tiwari, etc. from any positions were moved out. Soon after coming from foreign outing, Gandhis orchestrated the whole farmer and Hathras campaign
to relaunch Pappu and his sister Pinky. Go on, check Twitter and Facebook page of the Congress party. They have removed their symbol hand and their party flag from these places. Instead, they have put the pictures of Priyanka and Rahul Gandhi. Are they taller than the party symbol? This whole drama has been done to reinforce both the son and daughter as supreme and centralized power within the Congress party. आइए मेरे इस कथन की सत्यता की जांच करें। 2019 के कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर अगर हम नजर डालें तो वही सारी बातें हैं जो कि मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल बिल में है। फिर काहे का ट्रैक्टर पर बैठकर नौटंकी। दूसरी तरफ अगर हम हाथरस कांड को लें तो कुछ अजीबोगरीब तथ्य सामने आते हैं। पीड़िता काफी दिनों तक इलाज के सिलसिले में दिल्ली में थी। क्या उससे वहां नहीं मिल सकते थे? मैं ये कहता हूं कि जो भी हुआ वो एक जघन्य अपराध था, पर राहुल और प्रियंका का पैदल मार्च क्या सिर्फ टीआरपी के लिए था? रिपब्लिक टीवी के स्टिंग ऑपरेशन के बाद यह साफ हो गया है कि राजकुमार के रीलॉन्च के लिए पार्टी किस हद तक जा सकती है। गिद्ध वाली मानसिकता पार्टी पर हावी हो चुकी है और येन केन प्रकारेण पार्टी राहुल पप्पू को नेता बनाना चाहती है। अगर आपने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है तो क्या देश भी बांध ले? I do not wish to go in detail and embarrass my own party more, but yes, to resurrect the party which was formed by the sweat and blood of millions of Indians. It cannot be allowed to disintegrate by the foolishness of a few. It is as much mine as it belongs to you or to Rahul. And that is what I feel was the crux of the letter written by the 23 senior leaders. Ghulam Nabi Azad, Anand Sharma, Manish Tiwari among others, who have risen from the ranks and supported by thousands more. Elect a non-Gandhi person as the Congress president, which is not only good for the party but absolutely necessary for the country. A strong opposition is what is needed. The sentiments are supported by a social organization, the Brahma Sena, which by now is more popular in Uttar Pradesh than the Congress party itself. Look at it. How much the Congress party has lost. Before I end, my heartfelt condolences on the sad demise of Sri Ram Vilas Paswan ji, a tall leader from Bihar who was liked by all. आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिहार के आगे के इतिहास की, कांग्रेस पार्टी के आंतरिक कलह की, भारत के विदेश नीति की, कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम वीकली टेक्स फ्रॉम न्यूयॉर्क में। हाँ, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।